Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any. The family of an Indore resident whose body has been found after 11 days, he and his wife has gone missing while they went on a trip on Meghalaya, today alleged that his brother was murdered and demanded a CBI investigation into the matter. Here we are bringing you the full details. Indore tourist body found near George. Wife still missing and search operation ongoing. Murder case registered along with SIT formed. Family demands CBI probe and have cited robbery. Tourist safety concerns rise in Meghalaya. Yes, viewers, the family of an Indore resident whose body has been found 11 days after he and his wife went missing during their trip to Meghalaya today alleged he was murdered and demanded a CBI probe into the matter. Transport businessman Raja Raghuvanshi and his wife Sonam went missing on 23rd of May at Sorha in Meghalaya's East Khasi Hills district after going there for their honeymoon. The man's body was found in the northeastern state on Monday while search operation for his wife continues. The couple went missing on 23rd of May, just hours after leaving a guest house in Nongriyat village. According to Meghalaya officials, Raghuvanchi's body has been found on Monday in a Jeep George near a waterfall in Sora area of East Khasi Hills district. According to officials, Nongriyat village is located 20 km away from the place where the body was found, and the Meghalaya police have registered an FIR on charges of murder and formed the special investigation team in the case. Raja Raghuvanchi's elder brother Sachin Raghuvanshi today stated in Indore that this is a case of murder of my brother. I have only one demand from the government, that the mystery should be revealed by getting it investigated by the CBI. I have lost my brother, but I do not want to lose my sister-in-law Sonam. The government should find my sister-in-law at any cost. I have been demanding from the beginning that Army's help should be taken in the search operation, he stated. Sachin said his brother's body had decomposed so much that it was difficult to identify it from the face. He further stated that my brother had his hand name Raja tattooed on his hand. Since it rains a lot in Meghalaya, he went there wearing my waterproof smartwatch. When he was found dead, the watch was on his wrist. This also helped him in identifying him. Sachin stated he has suspicions on the local hotel, restaurant staff, guides and people who rent two-wheelers in Meghalaya in connection with the alleged murder of his brother and the disappearance of the latter's wife, and the police should strictly question them. Raja Raghuvanchi's family is into transport business in Madhya Pradesh, Indores. He got married to Sonam on 11th of May here and then went to Meghalaya for honeymoon on 28th of May. According to Meghalaya officials, the newlyweds reached the village on a rented scooty on 22nd of May. They parked their scooter and went to see the famous Living Root Bridge in Nongriyat village, where they stayed overnight and left the next morning. The couple's scooter was found abandoned at the cafe on the road from Shillong to Sora on 24th of May, following which police were informed and an initial search operation was planned with the help of local villagers. Here is what Vipin Raghuvanshi, brother of Indore tourist couple who went missing in Meghalaya, have stated. पुलिस सब लोग खुश है। बाकी इसमें जो रॉबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन SIT इसमें जब तक CBI नहीं आएगी तो मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा। कि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है।
क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज़ जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है। यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है और सरकार द्वारा मतलब उसको बैन किया गया है। तो उसके बाद भी उस पर कोई ना कैमरे लगे हैं ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। इसमें ज़्यादा डिले ना हो उसके पहले ही जैसे जो एनडीआरएफ टीम लगी है और इसी बीच में सीबीआई को बीच में आने से कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई बीच में आएगी कभी तो केस जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है और दिल्ली सरकार से मांग हमारी है तो उसमें सीबीआई लगी रहे। किसी से मुलाकात हमारी हुई नहीं है इस बारे में। उनसे बातचीत चल रही हमारी है। जी अभी नहीं, अभी इंदौर से कोई नहीं आ रहा है। अभी हम लोग 2 लोग यहाँ पे है बस। से लेके 1:45 तक बात हमारी हुई उनसे और उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और लास्ट टाइम जो बात हुई हमारी हुई थी उस टाइम ये कहा था हमारे को तो हम लोग यहाँ पे केला खा रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी बेकार लगी है जिसमें उनको स्वाद नहीं फेंक दी कॉफ़ी उस टाइम वहाँ पे। और उसके बाद में उनकी वही चीज़ें हम लोग फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को और फ़ोन लगा नहीं उन लोगों का। तो हम लोग 23 तारीख को हमने सडन फ़ोन लगा उनको नहीं लगा। 24 को फ़ोन लगा नहीं लगा तो 25 को हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोग को शक हुआ तो फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिया था सोरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं और आज राजा रघुवर सिंह की बॉडी हमको समाधि गई है। एनडीआरएफ टीम नीचे लगी हुई है और अभी हम लोग चाहते हैं सरकार से यहाँ पे तो सोनम रघुवंशी को जो है सही। That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.